हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एजुकेट योर सेल्फ विद सारा। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगी पाकिस्तान अफेयर के क्वेश्चन और कुछ जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रात-2 इज़ अ न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल ऑफ पाकिस्तान। नेल्सन मंडेला रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन इन 1990। अच्छा, ये नेल्सन मंडेला कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सूडान हैज़ वन द स्टेटस ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1956। यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज साइंड इन 1945। Which nation has launched a spy station in July 2020? Israel. Two-time Olympic champion Linden has retired from badminton. He belongs from which nation? Chinese. What is the old name of Tokyo? Edo. Which is the currency of Iceland? Corona. Which country has notified the UN that it is withdrawing from the WHO? USA. Name of the lady who has been ranked as the world's second richest woman in Forbes annual World's Billionaires list for 2020, Alice Walton. She is the second richest woman of the world. Which country hosts the 2021st Asia Pacific Economic Cooperation Summit virtually? New Zealand. Name the first African country who submits results for reducing emission from deforestation and forest degradation to UNFCCC. Uganda. UNFCCC stands for United Nations Framework Convention on Climate Change. Name the country which participated in past naval exercise at Malacca Strait with India to promote understanding in Indian Ocean in June 2020. जापान। ये जायंट एक्सरसाइज थी, नेवल एक्सरसाइज थी, जापान और इंडिया की हुई थी ये एक्सरसाइज। ऑन 10 जुलाई 2020 टर्की रिकन्वर्ट्स इस्तांबुल होगिया सोफिया मॉस्क म्यूजियम इनटू अ मॉस्क। Which was the first Arab country to launch Mars probe? UAE. Pakistan number in the world population wise on number 5th. The political party of Mussolini, Fascist Party. He was an Italian politician and the also founder of Republic Fascist Party. When Israel state was established? 1948. Identify the term that has been coined by the researchers to refer the COVID-19 induced lockdown period in human history, anthropause. Pakistan aims to generate 30% of clean energy by 2030. Who has been inaugurated the facility of country's first ever indigenously made ventilators at National Radio and Telecommunication Corporation in Haripur? Prime Minister Imran Khan. Who won the president election of Poland in July 2020? Andrzej Duda. Which nation will host Asia Cup cricket in 2022? Pakistan. In July 2020, the UK ordered all Huawei technology to be stripped out of the UK's 5G network by 2027. The UK banned the purchase of new 5G equipment from the Chinese telecoms giant Huawei from December 31st, 2020. Which nation has become the world's first to successfully complete human trials of its COVID vaccine? Russia. Zindesh Mandela, the youngest daughter of South Africa's first black president Nelson Mandela, died on 13th July 2020. She was South Africa's current ambassador to Denmark.
अच्छा, इसमें से आपको सिर्फ एक यही नहीं पता चलता कि जिंदीज़ मंडेला जो कि नेल्सन मंडेला की बेटी हैं, वो अभी इस टाइम जो है ना वो डेनमार्क की एम्बेसडर्स हैं। इसमें से ये भी साथ में पता चलता है कि नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। तो इस तरह से और इनकी डेथ हुई थी 13 जुलाई 2020, यानी रिसेंटली 1 साल पहले उनकी डेथ हुई थी नेल्सन मंडेला की। The Senate Committee for Human Rights approved the Pakistani movie Daesh for screening, dismissing all objection raised against the film ज़िंदगी तमाशा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा क्या ये मूवी रिलीज़ हो गई है या नहीं हुई है। Which nation has dropped India from Chabhar rail project? Iran. Which party has retained power in Singapore general election 2020? People's Action Party. Who introduced Bakar Mandi online mobile application to facilitate cattle purchase process on Eid al-Azha between buyer and sellers? पंजाब गवर्नमेंट। अच्छा, ये 2020 में ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी पिछले साल ईद अल-अज़हा के मौके पर। Name the Pakistani-born scientist who became the first international female vice president of the biology and medicine section at Germany's prestigious Max Planck Society. Asifa Akhtar. Which country became permanent member of SCO Shanghai Cooperation Organization Youth Council in July 2020? Pakistan. World's first pilgrims held at Lourdes Shrine in France. Alphabet Inc. launched balloon internet service in Kenya. Which is Pakistan's rank according to 11th edition of the Global Real Estate Transparency Index 2020 released by US-based property consultant John What is Pakistan's rank according to the 11th edition of the Global Real Estate Transparency Index 2020 released by US-based property consultant Jones Lang LaSalsa 73? Who gave the symbol of infinity? John Wallis. अच्छा, ये symbol of infinity आप देख सकते हैं किस तरह का हो सकता है, ये मैंने ब्रैकेट में डाला हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने आरा से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।